Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Rama की बजायो जयो कोरा चंद आरती कुशो की बजायो की बजायो चंद आरती कुशो चंद आरती कुशो की बजायो
की बजायो चांदनी जगमगी की बजायो की बजायो चांदनी की बजायो 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 की बनरा हरि यादी कोरी कामर दुराया
Anjaya Mukunda Mani Ota Vidaya Anjaya Mukunda Mani Ota Vidaya
Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय राधा पद सखी राधा पद सखी राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय वृंदावन राम जय राधे श्याम वृंदावन राम जय राधे श्याम प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्य श्रीमद His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्य श्रीमद His Divine Grace श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की मथुरा धाम वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवदीप क्षेत्र मायापुर धाम की निताय गौर प्रेमानंद All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada की। सभी लोग बैठ जाएंगे प्लीज, थैंक यू। सब लोग बैठ जाइए। नमस्ते नरसिंह लाद लाद हिरण शिलाटंका नथा तो नरसिंह पर तो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहे नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहमहरिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरे नखा अद्भुत श्रृंग ललिता हिरण्यकशिपु तनु केशवधूता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हरे
Jaya Jagadish Hare, Jaya Jagadish Hare, Jaya Jagadish. Jayo Nrisingh Dev, Jayo Nrisingh Dev. Nrisingh Dev, Jayo Nrisingh Dev. Jala Maharaj, Jala Prabhupada, Prabhupada, भक्ति विनाशक नरसिंह देव भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा और प्रभु जी इस साइड रहेंगे, थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा, इस साइड ऑन माय लेफ्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप है। और अभी थोड़ी देर के लिए कीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर मेन इवेंट स्टार्ट, ठीक है। अभी थोड़ा सा ट्रेलर, उसके बाद मेन इवेंट। हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। बोलिए सब लोग बोलिए लाउडर, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम louder everyone please chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare।
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Gaur Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Everyone louder, chant with your heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलिए Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada.
जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा अनिकाय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो आप सभी भक्तों के लिए का स्वागत है और आप सभी के लिए विशेष जो ध्यान देने वाला बात है कि आप सभी सबसे पहले अपने फ़ोन को साइलेंट में कर लीजिए। हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाशक नरसिम्हा महाराज का हमें एसोसिएशन मिलेगा। तो अपने फ़ोन को यदि कोई ऐसा ज़रूरी कॉल ऐसा करें कि हम लोग क्लास को डिसिप्लिन में, कुछ ऐसा नहीं कि सभी का कॉपरेशन चाहिए कि क्लास हमारा डिसिप्लिन में हो। और यदि किसी का कोई अर्जेंट कॉल ना हो, यदि किसी का है भी कुछ अर्जेंट, तो बैक साइड में जाके आप सबसे ऊपर में आप उसको उठा सकते हैं। और जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रेन हैं, हाँ, तो जो जिनके साथ में आए हैं चिल्ड्रेन, तो वो उनका स्पेशल टेक केयर करें क्योंकि उसकी वजह से पूरा सबका अटेंशन बैक साइड में जाता है। तो आप सभी भक्तों से फोल्ड हैंड रिक्वेस्ट है कि हम सभी जो है इस पूरे मर्सी को हम लोग जो है पूरा गेन करें और कोशिश करें। बहुत ध्यान से बताया जाता है कि जो हमें महाराज का जो क्लास है रैप्ड अटेंशन बहुत ध्यान से कोशिश करें सुनने का। और जो नोट्स भी आप लोग कुछ बना सकते हो, यदि आपके पास यदि ऐसे फिजिकल नोट्स नहीं है तो फिर फोन में नोट पैड होता है तो उसको आप कर सकते हैं। और हम सब भी जो है, तो आप सभी तैयार हैं? कितने वक्त तैयार हैं? अरे वाह! तो अभी लगभग 7:24 है, तो 5-6 मिनट्स और हम कीर्तन करेंगे और फिर उसके बाद फिर हम महाराज का ब्लेसिंग्स लेंगे। हाँ, हरे कृष्णा। सो विल मेंटेन द पिन ड्रॉप साइलेंस। 1 2 3 पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज। Thank you. Now we'd like to request Amarjit Prabhu to lead the Kirtan, please. Thank you. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् अंता स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौरा भक्ता Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Hare Krishna. Hare Krishna. So we would like to welcome all of you to today's special program. आपको मेरा आवाज आ रहा है पीछे? Can you all hear? आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम इस इवनिंग प्रोग्राम में आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम? Oh, okay. Special welcome to all of you. So we are here very excited to introduce to all of you, especially those who are coming first time. So we have our wonderful spiritual master, wonderful personality, His Holiness Bhakti Vighna Vinasak Nrisingh Swami Maharaj. So Maharaj is Srila Prabhupada's disciple. Maharaj Srila Prabhupada जी के शिष्य हैं. 1971 में जब हम में से काफी सारे लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तब महाराज ने अपना पूरा लाइफ सेक्रीफाइस किया. महाराज इंग्लैंड से हैं और महाराज ने अपना स्टडीज करने के बाद जब जॉब किया और उसके बाद जब वो हरे कृष्णा डिवोटीज से मिले तो उनका जो काइंड हार्ट है, उन्होंने सोचा कि ये पूरा जीवन मुझे हाईएस्ट सर्विस के लिए करना है और महाराज ने अपना पूरा लाइफ डेडिकेट कर दिया पूरे वर्ल्ड को सर्व करने के लिए. So we are
very excited. और Maharaj is a wonderful speaker on the teachings of Bhagavad Gita, on Srimad Bhagavatam. Maharaj is a teacher in Mayapur Institute. Maharaj Mayapur Institute में शुरू से वहाँ पे पढ़ाते हैं. And now Maharaj is a sannyasi in ISKCON. Maharaj के wonderful services और उनके selfless sacrifice को देख के ISKCON movement ने महाराज को ये award दिया. And then Maharaj is here to bless us. तो हम सब के पास बहुत सुंदर मौका है महाराज से सुनने का. We will hear and it will purify our heart. आप सब अपने मोबाइल्स बिल्कुल साइलेंट पे कर दीजिए. और अगर किसी को कॉल लेना है बीच में तो आप पीछे बैठिए. If you are expecting कि कोई कॉल आएगा then please sit in the last so that you don't disturb. Okay? So thank you Maharaj. So महाराज का स्वागत करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे online devotees can hear. Online devotees, Vikas Prabhu, can you confirm if you can hear? Okay, yes. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Jai Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. Gaur Premanande, Hare Bol. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane, Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Pascharcha Desha Tarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're speaking on the 9 different kinds of devotional service as described in the pages of Srimad Bhagavatam. तो श्रीमद् भागवतम में जो नवविधा भक्ति को समझाया गया है हम वहाँ पे चर्चा कर रहे हैं. This is described by the great devotee saint Prahlad Maharaj when he was addressing his atheistic father. तो ये वर्णन श्री प्रहलाद महाराज जो कि भगवान के एक महान भक्त हैं उन्होंने दिया जब वो अपने नास्तिक पिता को समझा रहे थे. His father was very atheistic, and it just so happened that he had inquired from his son what was the best thing he had learned from his teachers. तो उनके पिताजी पूरी तरह से नास्तिक थे और उनके पिता उनसे ये प्रश्न पूछ रहे थे कि उन्होंने अपने टीचर्स अपने गुरु से क्या सीखा. So Prahlad had 2 teachers. He had his material knowledge teacher, but he also had a spiritual knowledge teacher. तो प्रहलाद महाराज के 2 तरह के गुरु थे, एक तो आध्यात्मिक ज्ञान के और एक भौतिक ज्ञान के. The material knowledge teacher had instructed him in politics and how to deal with his enemies. और जो भौतिक ज्ञान के जो उनके गुरु थे वो उनको सिखाते थे कैसे पॉलिटिक्स करना है, कैसे अपने शत्रुओं से व्यवहार करना है. But his spiritual teacher had taught him the 9 processes of Bhakti Yoga. लेकिन उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे उन्होंने उनको भक्ति योग की 9 विधियों के बारे में बताया. And the 9 processes begin, first of all, with hearing, which we spoke about the other evening. तो ये जो 9 विधियां हैं उसमें से सबसे पहली विधि का नाम है श्रवण, जिसको हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था. After hearing, then one can go on to the next process, which is Kirtan or chanting. तो श्रवण को समझने के बाद हम अगला जो विधि है जिसका नाम है कीर्तन या जिसको चैंटिंग बोला जाता है उसके बारे में है. And chanting is not only chanting the holy names, chanting the Maha Mantra, but it's also chanting the glories of the Supreme Lord, describing his pastimes and qualities. तो ये जो कीर्तन है या जो चैंटिंग है उसका मतलब केवल भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन या जप ही नहीं, अपितु भगवान के गुणगान, भगवान की लीलाओं को बताना. The Supreme Bhagwan comes in many different forms at different times and performs always inconceivable pastimes. तो परम भगवान श्री कृष्ण समय समय पर अलग अलग रूपों में अलग अलग समय पर आते हैं और अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करते हैं. Generally, here in our Krishna consciousness movement, our hearing and chanting is based on, first of all, the Bhagavad Gita, and then after getting the basic knowledge of Bhagavad Gita, we go on to study the Srimad Bhagavatam. तो हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में जो श्रवण और कीर्तन का शुरुआत होता है
वो होता है भगवत गीता से, और भगवत गीता समझने के बाद हम लोग श्रीमद् भागवतम को समझते हैं। Srimad Bhagavatam, sometimes called Bhagavat Purana, is described to be the ripened fruit of the Vedic knowledge. श्रीमद् भागवतम, जिनको भागवत पुराण भी कहा जाता है, वो सभी वैदिक ग्रंथों का पका हुआ फल के समान है। The Vedas are described to be like a tree. Trees are not very valuable if there's no fruit there. As soon as the fruits are on the tree, then there's a lot of value there with the tree. तो जो वैदिक साहित्य है उसको एक पेड़ के समान माना गया है, और पेड़ अगर उसमें फल ना हो तो उस पेड़ का कोई खास महत्व नहीं होता, लेकिन जिस पेड़ पे फल होते हैं उसको बहुत महत्व होता है। So the Srimad Bhagavatam is the fruit of the Vedic, of the tree of the Vedic knowledge. तो श्रीमद् भागवतम जो वैदिक ज्ञान का जो पेड़ है उसके फल के समान है। And from the Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, we learn about this process of Bhakti Yoga and how it is the supreme process. It's a culmination of the yoga ladder. तो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से हम भक्ति को सीखते हैं, जो कि भक्ति योगा लैडर का आखिरी सीढ़ी है। Bhagavad Gita describes essentially three kinds of yoga. There's a yoga of action, karma yoga, the yoga of knowledge, Gyan Yoga, and then there is also the yoga of devotion, Bhakti Yoga. तो श्रीमद् भगवत गीता में मुख्य रूप से 3 योगों को चर्चा किया गया है, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग है। Here in the Krishna consciousness movement, we're all practicing this Bhakti Yoga. We're practicing the process of devotion to Lord Krishna, and it begins, the foundation of this Bhakti Yoga process is based on 2 activities, Shravanam and Kirtanam, or hearing and chanting. तो ये जो कृष्ण भावनामृत संघ है, इसमें हम भक्ति योग की विधि, जो कि भगवान की प्रेममयी सेवा, इस विधि पर हम पालन करते हैं, और जिसकी शुरुआत होती है श्रवण और कीर्तन से। So just as when we hear, we want to hear from the devotees of the Lord, and we want to hear about the Lord and his different forms and his different names. तो जब श्रवण का मतलब है कि हम भगवान के एक भक्त के द्वारा भगवान के सुंदर रूप और भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते हैं। So the same way when we chant, we want to chant the names of the Lord. We chant generally the Mahamantra. You've been hearing us chant this evening. We chant other mantras, other songs, but much more the chanting is based on the Mahamantra because it contains the names of the Lord. तो जिस प्रकार श्रवण था, उसी प्रकार कीर्तन या चैंटिंग जो है, उसमें हम भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन करते हैं। ऐसे तो हम कई प्रकार के कीर्तन करते हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख है हरे कृष्ण महामंत्र। आपने आज देखा ही होगा, ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हो रहा था। There are many names of the Lord, and some of you may also be chanting, for example, the Vishnu Sahasranam, the 1000 names of Lord Vishnu. But the 1000 names of Lord Vishnu is described to be equal to just simply one time chanting the holy name of Lord Rama. तो आप तो भगवान के कई सारे दिव्य नाम हैं, जैसे कि आपने सुना होगा विष्णु सहस्त्र नाम। तो भगवान विष्णु के 1000 नाम 1000 बार नाम जप करने के बराबर है एक बार भगवान राम के नाम को जप करना। And this was stated for us by Lord Shiva himself. He was instructing his wife Parvati that the holy name of Lord Rama is equal to once chanting the holy name of Lord Rama is equal to the 1000 names of Lord Vishnu. So not all the holy names of the Lord have the same potency. तो ये तथ्य भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी को समझाते हैं
कि भगवान श्री राम जी का एक बार नाम लेने से भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर है। तो भगवान के जो दिव्य नाम हैं उन सब में अलग अलग तरह का शक्ति है। Just like lights, electric lights, you can have dim lights, you can have night lights, and you can have very powerful spotlights. तो जैसे कि ये लाइट हैं तो अलग अलग हो सकती है, कोई ज्यादा तेज रोशनी वाली है, कोई रात के लिए है, कोई एकदम तीखी लाइट है। Yeah, the lights having different powers in the same way. While the Lord has many names, they're not all equal. Some names are more powerful than others. तो जैसे ये लाइट जो है अलग अलग पावर के बल्ब हैं, अलग अलग तरह की रोशनी है, इसी तरह सारे भगवान के नाम दिव्य हैं, लेकिन उसमें शक्ति अलग अलग है। And the scriptures also say that 3 names of Lord Rama are equal to 1 name of Lord Krishna. So it's the name of Lord Krishna which has the greatest power over all the other names of the Lord. और शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि भगवान राम के 3 नामों को लेना बराबर है भगवान श्री कृष्ण के एक नाम लेने से। तो इसलिए ये जो कृष्ण नाम है ये भगवान के सभी दिव्य नामों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। So we give the emphasis on the chanting of the Hare Krishna mantra. It gives us the greatest purification. तो इसीलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के जप पर जोर देते हैं, इससे हमें पूर्ण शुद्धता प्राप्त होती है। And when we chant, it's said we should chant loudly. We shouldn't just simply try to chant in the mind, but rather you want to chant out loud. और जब हम चैंटिंग करते हैं, जप करते हैं, तो ऐसा सिखाया जाता है कि जप हमें जोर से करना है, ऐसा नहीं कि केवल मन ही मन में। Srila Prabhupada used to tell us that the louder we chant, the more powerful it becomes. शिला प्रभुपाद जी हमें बताते थे कि जितना जोर से हम कीर्तन करते हैं उतना ही ज्यादा वो शक्तिशाली हो जाता है। And devotees like Narada Muni, he also chants the holy name loudly wherever he travels, and he's traveling through the universe to higher and lower planets, different regions. He's chanting the holy name. तो इसी जैसे कि भगवान के एक भक्त नारद जी, वो भी जब भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं तो बहुत जोर से करते हैं। वो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं और नीचे से ऊपर सभी लोकों में भ्रमण करते हुए जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। And Lord Brahma, he has 4 faces. We say Chaturmukh Brahma. He is chanting the holy names of Lord Krishna with all 4 faces. और ब्रह्मा जी जिनके 4 मुख हैं, वो अपने चारों मुखों से भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हैं। And Lord Shiva, he's Panchamukhi. He has 5 faces. With his 5 mouths, he's chanting the holy names of Lord Rama. और भगवान शिव जिनके 5 मुंह हैं, वो अपने 5 मुंह से भगवान श्री रामचंद्र के नामों का कीर्तन करते हैं। So this kirtan, this process of kirtan is very much recommended for this age, which is called the Kali Yuga, or the age of quarrel and the age of argument. तो ये जो कीर्तन है, ये इस कली युगा जो कि कलह का युग है, उस कलह के युग के लिए बहुत महत्वपूर्ण विधि है। We can see everywhere so much conflict in the world. One party, one political party is at war with another political party. There's always conflicts in this material world. तो महाराज बता रहे हैं कि हम देख सकते हैं इस भौतिक जगत में कितना कलह है, कितना लड़ाई झगड़ा है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ लड़ाई करती है। And this Kali Yuga, we're not very well qualified. Our nature and faults are described for us in the scriptures by Srila Vyasadeva, who was a great seer who knew the truth. तो श्रील व्यासदेव जो कि सत्य को अच्छे से देख पाते हैं, जान पाते हैं, वो कलियुग के हम लोगों का पद के बारे में बताते हैं कि हम लोग कोई बहुत योग्य लोग नहीं है इस कलियुग में, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। We are described as being manda sumanda matayo manda bhagya hi upadrutaha, that we're described as being lazy, misguided, unlucky,
and always disturbed. तो सुशील व्यासदेव हमें हमारे बारे में इस कलयुग के लोगों के बारे में बताते हैं कि हम लोग आलसी हैं, हम लोगों के पास सही दिशा नहीं है, हम लोगों का भाग्य अच्छा नहीं है और हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं. We don't really have such wonderful qualities. So we may think we're really good, you know, we have a good image of ourselves. We think I'm doing all right, I'm a good person. But if we study the scriptures, the Vedic literature, they describe that this age of Kali, people in this age are full of faults. तो हालांकि हम अपने बारे में अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ, कितना अच्छे मेरे अंदर गुण हैं, लेकिन हमारे जो वैदिक साहित्य हैं वो हमें ये बताते हैं कि इस कलयुग के जो जीव हैं उनके अंदर कितने सारे दोष हैं. So what to do about it? We're in this terrible situation. We have all of these faults, but there is one good thing about the Kali Yuga, and the good thing is that simply by chanting the holy name, one can get all perfection. तो इतने सारे ये जो दोष हैं, तो ये दोषों का फिर हम कैसे क्या करें इस कलयुग में? तो हमारे शास्त्र ये भी बताते हैं कि इस कलयुग में इतना सारा दोष है, लेकिन एक चीज है जो बहुत विशेष है इस कलयुग में, जिसका हम लाभ ले सकते हैं. There's a verse, a sloka in the scriptures which said that Kaler dosha nidhi rajan astihi eko mahadguna Kirtana Deva Krishna Shya Mukta Sangha Parambrajit. That although the age of Kali is an ocean of faults, there is one good thing, and that is that simply by chanting the holy name, one can get all perfection. तो ये श्लोक महाराज ने बताया, तो इस श्लोक के माध्यम से हमें समझ आता है कि हालांकि इस कलयुग में सब चीज में दोष ही दोष है, हर चीज में कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन भगवान के दिव्य नामों के जप करने से हम जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं. That perfection is to get free of birth and death in this material world, to actually get liberation out of this wheel of samsara. और ये जो पूर्णता है जो बताई गई है, वो पूर्णता क्या है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल पाएं. But although the chanting is certainly a benediction, is a blessing for all of us, we have to understand that there are some requirements in chanting the holy name. तो हालांकि ये जो भगवान के नाम का कीर्तन है, इसको बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, लेकिन इसको करने के लिए हमें भी कुछ चीजें करना होगा. To actually chant the holy name with good quality, we should be, for example, we should be tolerant like a tree, and we should be without false pride. तो उदाहरण के लिए अच्छा कीर्तन करने के लिए, अच्छा जप करने के लिए हमारे अंदर जो योग्यता चाहिए कि हम जो है सहनशील होने चाहिए. We should be willing to offer respects to others and not expect respect for ourselves. हम जो है दूसरों को पूर्ण मान देने में सक्षम होने चाहिए और अपने लिए मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए. If one has these kind of qualities, then it makes it easier for us to chant. अगर किसी के पास इस तरह की गुण है तो उसके लिए आसान हो जाता है जप करना. But if one is on the path of material progress and interested in improving his birth and his good looks and their education, material knowledge, then these things will be an obstacle to our good chanting. और यदि कोई भौतिक प्रगति के रास्ते पर है, जिसको बहुत सुंदर शरीर चाहिए, बहुत अच्छा विद्वता चाहिए और इस तरह की बहुत ऊंचा जन्म चाहिए, तो ये चीजें भक्ति के मार्ग में बाधा हैं. We want to become less attached or attracted by the material energy. We should feel that this world is not giving us the greatest pleasure. तो वास्तविकता में हमें क्या करना चाहिए? वास्तविकता में इस भौतिक गुणों, भौतिक आकर्षण से हमें बचना चाहिए, जानते हुए कि ये हमें सबसे
उत्तम सुख नहीं दे सकता। We should be looking for a solution to the problems of life. हमें इस जीवन की जो असली दिक्कतें हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। And those problems of life are not just simply economic problems, but the real problem is that we have forgotten our identity. तो जो सबसे बड़ा दिक्कत है इस जीवन का ये नहीं है कि आर्थिक दिक्कत है, आर्थिक दिक्कत नहीं, असली दिक्कत है कि हम अपने आप को भूल चुके हैं। We're not able to understand our spiritual identity. हम अपने आध्यात्मिक खुद को नहीं जान पाते। We simply think of ourselves as a material body, and we're thinking, I am this body, my goal in life is to satisfy my senses. तो हम अपने आप को ये भौतिक शरीर मान बैठे हैं और हमें जीवन का लक्ष्य लगता है कि इन भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करना। So the Bhagavad Gita explains to us that this body is likened to a dress, that just as we change the dress, we change also bodies. We change the body from the child to the youth, to the young man, to the old man. And in the same way, at the time of death, we take another body. तो श्रीमद् भगवत गीता में ये समझाया गया है कि ये जो शरीर है उसको एक वस्त्र से तुलना किया गया है। तो जिस प्रकार की सबसे पहले हमारा छोटा शरीर होता है, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर युवा होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, एक दिन वृद्ध होते हैं, और वृद्ध होने के बाद जब मृत्यु होता है तो फिर हम दूसरा शरीर लेते हैं। We've had many bodies, birth after lifetime after lifetime. We've been taking birth and dying in different forms of life. Now we have the human form of life, which is very special. हमने कई बार जन्म और मृत्यु हो चुका है, कई बार हम जन्म ले चुके हैं, कई बार मृत्यु हो चुकी है और कई योनियों में हम लोग जा चुके हैं, लेकिन ये जो मनुष्य योनि है वो सबसे विशेष है जो अभी हमें मिला है। And the Vedas tell us there are 84 lakh species of life. So we have been through many different species of life. और वैदिक ज्ञान हमें बताता है कि 84 लाख तरह की योनि है और इसमें से हम कई सारी योनियों में जा चुके हैं। But somehow we've come to this human form of life, and we've taken birth in this particular age, this age of Kali. More than that, you have taken birth in the land of Bharatvarsh, a very special land in the universe. लेकिन किसी प्रकार से इस बार हमें ये मनुष्य जीवन मिला है और ये मनुष्य जीवन भी मिला है हमें कलियुग में, और उसके ऊपर ये जीवन हमें मिला है इस पुण्य भारत भूमि में। It is often said that to take birth in the land of Bharatvarsh is very special, and it's an opportunity to become perfect. One should utilize that birth to make oneself perfect, and then one should think about helping others. तो ऐसा बताते हैं कि भारत भूमि में और ये जन्म होता है, ये बहुत ही इसको उत्तम माना गया, बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इस यहाँ पे हमें जीवन की पूर्णता तक पहुँचने का उपलब्धि हो सकता है, और पहले हमें अपने जीवन को परफेक्ट करके फिर हमें दूसरों को मदद भी करना चाहिए। It's described in the sloka, Bharat Bhumi te haila manushya janmaja, janma sartaka karikara para upakar. So para upakar means working for the benefit of others, not just thinking about our own self, but thinking how to give benefit to others. तो यहाँ पे पर उपकार यानी कि दूसरों को कैसे उनका मदद करना, केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना, अपने स्वार्थ के बारे में, दूसरों की मदद करने की चिंता। So this is the principle behind Bhakti Yoga. Bhakti Yoga is something which we do not just simply for our own benefit, but we are thinking about how to benefit all living entities. तो भक्ति योग का यही सिद्धांत है। भक्ति योग में हम केवल वो कार्य नहीं करते जिसमें केवल हमें ही जिससे लाभ मिले, अपितु हम दूसरों के लाभ के लिए भी कार्य करते हैं। And one of the very powerful ways in which we can give benefit to everyone is by this chanting of the holy names of the Lord. और एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका जिससे
जिसके द्वारा हम ये कर सकते हैं वो है दूसरों को भगवान के दिव्य नामों को देना। But like in everything, there are qualities. You get high quality, you get low quality. In chanting of the holy name, there are 3 levels. There is what is called offensive chanting, then there is the shadow of the pure name, and then there is the actual pure name. तो जिस प्रकार हर एक चीज में कई तरह की क्वालिटी होती है, अच्छा क्वालिटी, खराब क्वालिटी, इसी तरह से जप में, कीर्तन में 3 तरह के क्वालिटी बताए गए हैं। पहला अपराध युक्त, दूसरा प्रतिबिंब और तीसरा जो है शुद्ध। So it's mentioned that there are 10 offenses to be avoided in the chanting of the holy name. And the most common of all these offenses is inattention in the chanting. तो शास्त्रों में बताया गया है कि हरि नाम के जप को करते समय हमें 10 प्रकार के अपराधों से बचना चाहिए, और उसमें सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वो है हरि नाम के जप करते समय हम लोग पूरी तरह से ध्यान केंद्रित ना हो। From the inattentive chanting, then all these other offenses also come, and the chanting doesn't have the same potency. तो इस प्रकार अगर हम जप को ध्यान से नहीं करते तो इससे बाकी सारे अपराध भी प्रकट होते हैं और हमारा जप जो है उतना अच्छा नहीं हो पाता। How to chant with more attention? Well, one way in which you can chant with more attention, as I said, louder you chant. The louder you chant, the more you feel attention, you give the attention to the holy name. तो कैसे हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक जप करना है, तो कैसे ऐसा ध्यान बढ़ा सकते हैं? तो महाराज ने बताया कि जैसे मैंने बताया कि जोर से, जितना ज्यादा जोर से हरि नाम का कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, उतना ज्यादा वो अच्छे से कर पाएंगे। And to give attention to the holy name, to chant with full attention, it's also helpful to come into the association of other devotees who are also chanting. और एक और तरीका अच्छे से जप को करने का कि भक्तों के संग में बैठकर जप करना। If you like, you can come here tomorrow morning, 5 o'clock in the morning. We have our, first of all, 5 o'clock we have our arti. Then after the arti, then worship, then we will sit and chant the holy name. अगर आप इसको असली में करके देखना चाहते हैं तो कल आप सुबह यहाँ पे आ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे 5 बजे आरती करते हैं, उसके बाद हम सब लोग बैठ के जप करते हैं। We sit together, chant the holy name of Krishna. We don't talk, there's no other speaking, there's only the recitation of the Maha Mantra. And we all chant, we have our beads and we chant on the mala of the beads. तो आप आ सकते हैं, हम सब लोग बैठकर यहाँ मिलकर जप करते हैं। उस समय और कोई कथा नहीं होता, हम उस समय केवल हरि नाम का जप ही करते हैं एक साथ बैठकर। It's a very powerful process of meditation on the sound of the mantra. तो ये मेडिटेशन का बहुत ही शक्तिशाली तरीका है, भगवान के नाम की शब्द ध्वनि पर मेडिटेट करना। People sometimes meditate, they think they can meditate by sitting silently and control the mind and fixing the mind, but that's not recommended in this age. तो कई बार लोग सोचते हैं मेडिटेशन का मतलब शांति से बैठ जाना, अपने मन को उससे कंट्रोल कर लेना, लेकिन शास्त्र ऐसा मेडिटेशन नहीं बताते। You sit silently, the mind will wander, the mind is going to go away. You're not going to be able to just simply sit and concentrate the mind. तो अगर आप शांति से चुपचाप बैठ जाएंगे तो आपका मन जो है वो हर तरफ भागेगा, मन घूमता रहेगा और आपका मन कभी शांत नहीं हो सकता। But when we chant the Maha Mantra, when we are chanting, reciting the holy name, then it's much easier for us to focus, to give our attention on the sound of the mantra. लेकिन जब हम बोलकर हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं तो हमारा मन जो है फिर उससे ज्यादा आसान होता है हमारे मन को नियंत्रित करना। So that's one problem, a big problem in chanting, that we have to give the attention. We do want to hear. We use the tongue to chant and the ear is to hear. We want to hear the sound of the mantra. And if that sound of the mantra enters to the heart, then it will clean the heart of all the dirt, of all the contamination. तो इस हरि नाम के जप का जो विधि है उसमें हम अपनी जीवा द्वारा
हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, कानों द्वारा उसका सुनते हैं उसको, और फिर जब ये महामंत्र हमारे हृदय में प्रवेश करता है तो हमारे हृदय को ये शुद्ध कर देता है। Our hearts are not clean. Within the heart we have lust, anger, greed. So many bad things are there in the heart. तो हमारा जो हृदय है वो शुद्ध नहीं है। हमारे हृदय में काम वासना, क्रोध, लोभ, ऐसे कई तरह की दिक्कतें हैं। But by making this practice regular to chant the Mahamantra, that sound vibration, the chanting of the mantra will help us to remove these things from the heart. लेकिन अगर हम नियमित रूप से जप करेंगे तो इस शब्द ध्वनि द्वारा हमारे ये जो हृदय के कल्मश हैं वो शुद्ध हो जाएंगे। It's also important that in our dealings with other people, we should be careful not to quarrel and argue with them and find fault with them. और ये भी महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों के साथ में हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम उनसे झगड़ते ना रहें या उनमें हम कमियां ना देखते रहें। It's very common in this age. I said this is the age of quarrel, and it's easy for people, even in the own family, even between brothers, that they will quarrel and argue with each other about something which is really actually very small and insignificant, but it will become a big issue. लेकिन जैसे आपको बताया कि ये कलयुग है, ये कलह का युग है, और इसमें बहुत आसान है एक दूसरे से झगड़ना। दो भाई भी आपस में झगड़ बैठते हैं और कई बार वो ऐसी चीजों के लिए झगड़ते हैं जो कि बिल्कुल भी खास महत्वपूर्ण नहीं होता। And it's not good for us if we quarrel and argue with other people who are devotees, who are also chanting the holy name. We don't want to quarrel with anyone, especially devotees. और खास तौर से हम किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन खास तौर से जो लोग जो दूसरे भक्त हैं उनसे हम बिल्कुल झगड़ा नहीं करना चाहते। Another problem which can often come is people sometimes want to take advantage of the holy name, the chanting of the holy name. They think that on the basis of the chanting of the holy name, they will do something sinful and then they will make up for it by chanting the holy name. तो एक और दिक्कत ये आता है कि कई बार लोग सोचते हैं कि हरि नाम के जप के बल पर वो पाप कर लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि अब दोबारा हरि नाम करके मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊंगा। So we want you to understand there are some rules in chanting, and if we break these rules, then the chanting won't have the same effect. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जप करने में कुछ नियम है और अगर ये नियम को हम तोड़ेंगे तो जप उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। So how to overcome the effect of these mistakes or offenses in our chanting? The solution to overcome all of these offenses is more chanting. You chant more. Constant chanting can help us to nullify the effects of all of our offenses. तो ये जो भी हम अपराध इतने सारे कर बैठते हैं, तो ये अपराधों से मुक्त कैसे हों? तो ये सब अपराधों से मुक्त होने का तरीका है और ज्यादा जप करना। जब हम निरंतर जप करते हैं तो हम इन अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। Just like if you offend a person, how can you overcome the offense of that? You've found fault, you've made a big mistake. The person actually didn't do anything wrong, but we're finding fault with the person and we're criticizing him. So how can we make up for that offense? जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आपने किसी के प्रति बहुत अपराध कर दिया, उसने कोई गलती भी नहीं किया और आपने बिना गलती किए भी उसको अगर आपने बहुत कुछ कह दिया, तो आप फिर उस गलती जो आपने कह दिया उसका निवारण कैसे करेंगे? We overcome that offense by taking shelter of that person, simply by submitting ourselves to him and recognizing him and serving him. तो उस अपराध से बचने का तरीका है कि हम उस व्यक्ति के प्रति शरणागत हों, उनसे माफी मांगे और उनके प्रति शरणागत हों। There's a pastime in
relation to one great devotee. There was this one devotee who came to visit Mayapur in the Lila of Lord Chaitanya Mahaprabhu. There was a great devotee named Pundarik Vijanidhi, and he came from what is now Bangladesh. He came over to Mayapur, where Chaitanya Mahaprabhu was living, and he was generally recognized as a great devotee. So it was told to another devotee, this other devotee's name was Gadadhar, and they told him, you should go and see this Pundarik, he's really a great devotee. तो महाराज ऐसा एक उदाहरण बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में ऐसा एक उदाहरण है, एक भक्त का जिनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि, और ये पुंडरीक विद्यानिधि पहले बांग्लादेश में रहते थे और बांग्लादेश से फिर ये मायापुर आए, और पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो महान भक्त हैं। गदाधर पंडित को ऐसा मुकुंद नाम के एक भक्त ने बताया कि हमें पुंडरीक विद्यानिधि से मिलना चाहिए। And so Gadadhar went to see this Pundarik. Now Gadadhar was he was a brahmachari, and he was very austere and renounced his whole life. He lived a very simple and frugal life. And he went there to see this Pundarik, and he was surprised. He thought, he can be a big devotee. He doesn't look like a good devotee. तो पुंडरीक विद्यानिधि, तो गदाधर पंडित वो एक ब्रह्मचारी थे, उनका जीवन बहुत ही सादा था, और जब वो पुंडरीक विद्यानिधि को देखे जाके, तो उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि को देखकर बोला कि ये तो कोई महान भक्त नहीं लगते, ये तो भक्त नहीं लगते। He was sitting in a big chair, and he had servants fanning him. One servant had a peacock fan, and the other one was with a chamara. And Pundarik was sitting there dressed in so many fine clothes and silks, and very nice hair, and all his nails were nicely manicured, and rings on the finger, and some jewelry. तो जब उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि को देखा, तो पुंडरीक विद्यानिधि एक बड़े सिंहासन पर बैठे थे, और उनके कई सारे नौकर थे। एक नौकर मोर पंख डुला रहा था एक तरफ से, तो दूसरा चांवर डुला रहा था, और उनके बहुत सुंदर वस्त्र पहने थे, बहुत सुंदर उनके बाल थे, और कई सारी उन्होंने उनके नाखून जो है बहुत अच्छे से बने हुए थे, कई सारी अंगूठियां पहनी थी, और कई सारे हार पहने थे। So Gadadhar saw him, then he saw on the table in front of Pundarik, there were so many namkins and sherbets and sweetmeats. और देखा कि उनके सामने जो मेज था, उस मेज पे कई सारे नमकीन और बिस्किट, शरबत, इस तरह की चीजें रखी थी। And Gadadhar, he's just from a very simple, very poor family, and he was thinking, I don't think he could be a good devotee. He doesn't look like a good devotee. और गदाधर पंडित जो कि बहुत ही विनम्र परिवार से थे, बहुत ही सादा जीवन था जिनका, उन्होंने जब देखा पुंडरीक विद्यानिधि बोले कि ये तो अच्छे भक्त नहीं हो सकते। So the devotee who had come there with Gadadhar, his name was Mukunda, and he understood that Gadadhar was doubting that he's really a good devotee. So Mukunda recited a beautiful verse from the scriptures describing the mercy of Lord Krishna. तो मुकुंद जो कि गदाधर पंडित के साथ में आए थे, वो गदाधर पंडित को देखकर समझ गए कि गदाधर पंडित इन पुंडरीक विद्यानिधि को समझ नहीं पा रहे, इसलिए मुकुंद ने शास्त्रों में से एक ऐसा श्लोक बोला जो भगवान की कृपा को बताता है। And Mukunda recited out loud, Aho Bakiyam Stanakala Kutam Jagam Sayapayana Tapya Sadvi Labegatim Datri Uchitan Tanumyam Sampayanam, like that. The verse is saying, who could be more merciful than Lord Krishna? That although Putana came with poison on her breast, and she wanted to kill Lord Krishna,
but because she came like a mother and she offered her breast to Krishna like a mother, although her intention was evil, Lord Krishna just considered that she wants to be my mother. So Lord Krishna, while sucking out her life air from her body, he brought her to the spiritual world. He liberated her. तो जो मुकुंद ने श्लोक बोला था, महाराज ने श्लोक बोल के बताया, तो वो श्लोक का मतलब ये था कि भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा करुणामयी कौन हो सकता है, जिन्होंने पूतना, जो कि भगवान को मारने की इच्छा से आई थी और अपने स्तनों में विष लगा के आई थी, तो उसी पूतना को भगवान ने जब स्तन पान किया और उनके प्राणों को हर लिया, और उनके प्राण लेने के बाद भगवान, क्योंकि वो भगवान के माता की तरह से उनको दूध पिलाने आई थी, इसलिए भगवान ने मारने की इच्छा से आई थी और अपने. And when Pundarik heard this sloka, his bhav for Krishna arose, and he fell off his seat, and he rolled on the ground, and he cried and cried, and tears came from his eyes, and the whole floor flooded with water with the tears from his eyes. And he rolled on the ground and cried, and his body trembled, his hair stood on end. In this way, he exhibited his ecstatic love for Lord Krishna. तो जैसे ही पुंडरीक विद्यानिधि ने दो भाई भी आपस में जगह बैठते हैं, ने बोला था, कई बार वो ऐसी पुंडरीक विद्यानिधि अपनी सीट से गिर गए और मैं लोटपोट होने लगे, उनकी आंखों में पूरी तरह से अश्रु प्रवाह होने लगे और पूरा फर्श जो है उनके अश्रु के पानी से भीग गया, उनके शरीर में कंपन होने लगा और शुद्ध भक्ति के जो सारे लक्षण, especially devotees. So when Gadadhar saw this display of bhava, then he understood, oh, this Pundarik is really a great devotee. And he thought, oh, I've committed a great offense, because in my mind, I was thinking he's not a devotee. I was thinking he was a materialistic person. So जब गदाधर पंडित ने देखा पुंडरीक विद्यानिधि का ऐसा दशा, तो उनको समझ आया कि पुंडरीक विद्यानिधि तो बहुत महान भक्त हैं, और उनको लगा कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, क्योंकि मैं तो इनको एक भौतिकवादी व्यक्ति समझ रहा था अभी तक. So Gadadhar considered, he thought, I've committed an offense. This is very bad for my spiritual advancement. How will I ever make up for this? तो गदाधर पंडित को जब ये विचार आया, उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा, ये तो मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, अब मेरे आध्यात्मिक जीवन में मैं कैसे प्रगति करूंगा. So Gadadhar decided he would accept this Pundarik as his spiritual teacher. और गदाधर पंडित ने उस समय ये निर्णय किया कि ये जो पुंडरीक विद्यानिधि हैं, इनको मैं अपना गुरु के रूप में स्वीकार करूं. And that's quite appropriate, because Gadadhar, actually Gadadhar is the expansion of Srimati Radharani, and Pundarik Vijanidhi is considered not different from Maharaj Vrishabhanu, who is the father of Srimati Radharani. तो गदाधर पंडित का ऐसा करना बहुत उपयुक्त था, क्योंकि गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी के विस्तार थे और पुंडरीक विद्यानिधि वो वृषभानु, जो कि श्रीमती राधा रानी के पिता हैं, वो थे. But the point is, we want to be very careful how we deal with devotees. We don't want to offend anyone. So the way to avoid offending them is always try to offer respect to others. तो यहाँ से जो मुख्य बात समझने वाला वो है कि हमें कैसे भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना है, और उस अपराध नहीं करने का तरीका है भक्तों को मान देकर. Indeed, Lord Chaitanya has taught us in his famous prayers in the Shikshastikam, offer all respects to others and don't be anxious for respect for yourself. श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रमुख प्रार्थना, जिसका नाम है शिक्षाष्टकम, उसमें बताया है कि कैसे हमें दूसरे को मान देने के लिए पूर्ण तरह से तैयार रहना चाहिए और अपने मान की कामना नहीं करनी चाहिए. And we're told, put that verse on a thread and wear it around your neck for constant remembrance. महाप्रभु बोलते थे कि इस श्लोक को एक
सूतली में डालकर अपने गले में इसको लपेट लीजिए ताकि आप हमेशा इसको याद रखें। We want to remember the holy name, and we want to remember also the qualities with which we want to chant the holy name. तो हम भगवान के दिव्य नाम को हमेशा याद रखना चाहते हैं और उन गुणों को भी हमेशा याद रखना चाहते हैं जिससे हम भगवान के दिव्य नाम को अच्छे से जप कर सकें। So when we chant properly, then there will be also hearing and there will be also remembering there within the chanting. तो जब हम अच्छे से जप करेंगे तो उस अच्छे से जप के अंदर श्रवण भी होगा और स्मरण भी होगा। So we will stop here today and we'll ask if there's any questions. तो हम यहाँ पे विराम देते हैं, अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Maharaj, I have one question. They said in the lecture we have to do attentive chanting. So Maharaj, I want to actually know what should we do when we are chanting like this. We are chanting Hare Krishna, Hare Krishna. So do you remember Hare Krishna Mahamantra? What actually we should think in this while. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि महाराज आपने बताया कि ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, तो इसका असली मतलब क्या है? तो हम जब जप करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या उस समय हमें हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में सोचना चाहिए या क्या करना चाहिए? You use the tongue to chant and the ears to hear. It's not a question of the mind. तो हरे महाराज बता रहे कि ये इसमें आपके मन का कोई बात नहीं है, आपको जीवा से बोलना है और कानों से सुनना है। So use your tongue to chant properly, to chant clearly, so that you're chanting properly the sound, the mantra, and use the ears also to focus on hearing the sound of the mantra. तो आप अपनी जीवा को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए और उसको फिर ध्यान से सुनिए। And if you're doing that properly, you won't have to be worried about what to think in the mind. और अगर आप ये अच्छे से करेंगे तो आपको ये सोचने की चिंता नहीं है कि मन से क्या करना है। Just concentrate on hearing and chanting. केवल श्रवण और कीर्तन पे अपना पूरा ध्यान लगाइए। Don't worry about thinking. सोचने के बारे में मत सोचिए। Yes. तो इनका प्रश्न है कि is there any appropriate time when we should chant? तो इनका प्रश्न है कि ये हरे कृष्णा जप करने के लिए क्या कोई उचित समय है क्या? It is said in the Shikshastikam prayers, there are famous prayers called Shikshastikam, which came from the mouth of Chaitanya Mahaprabhu. And in his prayers, he said there are no hard and fast rules in chanting the holy name. So you can chant any time. तो एक प्रमुख प्रार्थना है जिसका नाम है शिक्षाष्टकम, जो कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकला है। उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हरि नाम को जप करने के लिए कोई कड़े नियम नहीं है, कभी भी जप कर सकते हैं। Yes. He was thinking about that is not the as he said that what in his mind. So he heard that doing offenses to the Vaishnavas this is the same as when we think in our mind. So thinking in mind is also at the same impact of offense. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि आपने बताया कि गदाधर पंडित ने जब पुंडरीक विद्यानिधि को देखा था तो उन्होंने सोचा था कि ये तो भक्त लगता ही नहीं है, तो उनसे मन ही मन में अपराध हो गया था। तो प्रभु जी का प्रश्न ये है कि क्या जो मन में हुआ अपराध या फिर शरीर से किया हुआ या बोल के किया हुआ अपराध, क्या वो दोनों बराबर दर्जे के हैं या ऊंचा नीचे हैं?
Offenses with the mind are not as serious as offenses which are physically, which are done with the body or with the words. तो महाराज बता रहे कि मन से किए गए अपराध उतना घातक नहीं है जितना कि शरीर या जबान से किए गए हों. But if we allow that offensive mentality to remain in the mind, then it will be manifest in actions. So we may go on to do things and to say things which are also offensive. So in this way, we get more serious reactions. लेकिन अगर आप मन के स्तर पर अपराध करते रहेंगे, तो वो मन के स्तर वाले अपराध हमें शरीर और जबान के अपराध पर भी धीरे-धीरे आ जाएंगे. और उससे फिर हमें उसका घातक प्रभाव होगा. So in the Kali Yuga, we don't get offenses for what we think in the mind, but the problem is this offensive thinking will become manifest with the actions, and then we get reactions. तो इस कलियुग में मन के स्तर पर किए गए अपराधों को नहीं गिना जाता, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर हम मन के स्तर पे अपराध करते हैं, तो कुछ समय में वो शरीर और जबान के स्तर पर भी आ जाता है, जो कि बहुत खतरनाक है. Because what we're thinking in the mind, we'll do in the actions will then manifest. क्योंकि जो हम मन में सोच रहे हैं, कुछ समय बाद उसको शरीर से भी कर डालेंगे. So you have to be very careful what we're thinking in the mind. तो हमें बहुत सावधान होना पड़ेगा हम मन में क्या सोच रहे हैं. So Gadadhar was concerned. He wanted to be sure of making spiritual progress. तो गदाधर इसको लेकर बड़े चिंतित थे. उनको वो चाहते थे कि वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति करें. He didn't want to be burdened with the reactions for any kind of offenses. तो वो किसी भी प्रकार के अपराधों के भार से अपने आप को नहीं रखना चाहते थे. So yes. Now we are doing this chant from our government here from our ears. If my mind is going somewhere else, although it is said that there is no real mind, if my mind is going somewhere else, how come my hearing would be affected? तो प्रभु जी का प्रश्न है कि महाराज आपने बताया कि इस हरि नाम के जप में मन का कोई काम है ही नहीं. आपको जबान से बोलना है, कानों से ध्यान पूर्वक सुनना है. लेकिन अगर हमारा मन इधर-उधर भटक रहा है, तो हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे कैसे? If your mind is going here and there, it means you're not focusing on your hearing and chanting. It means you're not hearing properly, you're not chanting properly because you're listening to your mind. Your mind is going here and there and everywhere. So how could your chanting be, and your hearing, it's not happening. You're just listening, you're on the platform of the mind. You're not listening to the holy name. तो महाराज बता रहे हैं कि अगर आपका मन इधर-उधर जा रहा है, इसका मतलब आप ध्यान से श्रवण और ध्यान से बोल नहीं रहे और ध्यान से सुन नहीं रहे. क्योंकि अगर आप ध्यान से बोल रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं, तो आपका मन इधर-उधर नहीं जाएगा. Yes, Prabhu. आपने अपना जीवन प्रोग्राम को पूरा दे दिया, हम आपके लिए 2 घंटे नहीं दे पा रहे हैं. इसके लिए क्षमा चाहते हैं. मेरा क्वेश्चन महाराज ये है कि भक्ति तो करते हैं बराबर, लेकिन फिर पीछे चले जाते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए. तो महाराज जरूरत भी पूरी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं. तो महाराज भक्ति आगे कैसे बढ़े, हमारा बार-बार पीछे चले जाते हैं. So Maharaj, Prabhuji first is thanking you, saying that you have given your whole life, but we are not even able to come here for 2 hours to listen to you. And then he is asking question that I try to make some advancement in Krishna consciousness, but because I am so busy in fulfilling my material responsibilities, I come back to the lower level again. Then I again try, again I come back to the lower level because of those material engagements. So what can I do? Well, you have to keep trying. You have to keep trying. Don't give up.
Failure is the pillar of success. In the beginning, you may not succeed, but keep trying. And gradually, one day you will succeed. And you should remember also that the Vedas prescribe that we should move on. You know, when we get to the age of 50 and over, the Vedas say, Pancha Sorvam Vanambrajit. We should enter into the retired ashram. We should become the vanaprastha. Not that you're always busy in the activities of the material world, but you have to retire from the material activities and take up the spiritual activities on a full-time basis. It's required. तो महाराज बता रहे हैं कि सबसे पहले महाराज बोल रहे हैं कि आप प्रयास करते जाइए, बार बार प्रयास करते जाइए, फेल होते हैं फिर भी प्रयास करते जाइए, क्योंकि जितना बार भी फेल होंगे फिर भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। और फिर महाराज आगे आपको बता रहे हैं कि वेदों के हिसाब से हमें धीरे धीरे अपनी भौतिक जिम्मेवारियों को 50 साल की उम्र से कम करना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए, जिसमें कि हमें एक रिटायर्ड जीवन जीना चाहिए और ज्यादा समय पूरा समय कृष्ण भावनामृत में देना चाहिए। इसकी जरूरत है। And as we get older, from the age of 50 on, we're old, you have to prepare for the next life. You have to think about the next life. You don't just think about this life. You have to think about the next life. तो 50 साल की उम्र से अब आप वृद्ध हो रहे हैं, तो आपको अब अपने अगले जीवन की चिंता करनी चाहिए, इस जीवन की नहीं, अगले जीवन की तैयारी करनी चाहिए। So that preparation requires giving up the material duties, not worrying anymore about working all the time and making money, not worrying all the time about the new car or the new house or a new child or whatever. You have to retire from all these things. तो महाराज बता रहे कि ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी भौतिक जिम्मेवारियों से को पूरा तो खत्म करते जाएं, जैसे कि नया गाड़ी, नया घर, नए बच्चे, ये सब चीजें हमें नहीं सोचना चाहिए, इनको खत्म करना चाहिए ताकि अगले जीवन का तैयारी कर पाए। Take up full-time spiritual practice. और फुल टाइम पूरा समय केवल भक्तिमय कार्य में लगना चाहिए। You don't need to leave the home. You can stay at home, but you have to be more total. You must be dedicated to the spiritual practice. तो आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप घर में ही रहिए, लेकिन तो पूरा अपना ध्यान है वो आध्यात्मिक गतिविधियों में लगाइए। You can keep your wife with you. You can keep the family there as well. But you know your duty with them is finished. That's over. आप अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ में रह सकते हैं, लेकिन आपका जो उनके प्रति जिम्मेवारी है वो खत्म हो चुका है। You have to tell them. You just have to make it clear. आपको उनको बताना होगा, उनको अच्छे से बता दीजिए ये बात। They are all here. Okay. Yes, Prabha. So that just mean we have to be good to the one who are holding a grudge against us. So Have a grudge against us? So he says that Krishna gives the position of mother. She came to kill him, but so should we do favor to those who are having grudge for us? तो इनका प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को माता का दर्जा दिया जबकि उनको मारने आई थी, तो इसी तरह अगर हमारे प्रति कोई शत्रुता का भाव रखता है तो क्या हमें भी उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए? Someone has a grudge against you, there must be a reason for it. You must have done something in the past. तो अगर किसी व्यक्ति के मन में आपके प्रति शत्रुता है तो इसका कोई कारण होगा, आपने पीछे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया होगा। So you're going to, they do something to you, you're going to do something back to them, and you're going to perpetuate, the whole thing is going to go on and on, will never end. तो अगर फिर आप उसका बदला लेंगे तो इसका मतलब आप फिर से ऐसा ही एक और चीज आगे ला रहे हैं और फिर वो करेंगे, फिर आप करेंगे, तो ये चलता ही रहेगा।
You know, if you're thinking an eye for an eye, a tooth for a tooth, then we will have no eyes, we'll have no teeth. अगर आप आंख का बदला आंख से लेंगे, दांत का बदला दांत से, तो ऐसा समय आएगा ना आंखें बचेंगी ना दांत. So we say become tolerant like the tree. तो इसीलिए बोला जाता है कि पेड़ की तरह सहिष्णु बनिए. Hare Krishna. Yes, Prabhu. So Maharaj, Prabhuji is asking, you have told that we should 100% attentively speak with our tongue and 100% attentively hear from the ears. But if I am not able to reach to that level, and if my mind is wandering, so will that give me, will that be of any use or no use? Yes, but the solution is constant chanting. Even though you're chanting without attention, keep chanting, don't stop. And if you continuously chant, then one day gradually you'll get that proper hearing and chanting. तो महाराज कह रहे हैं कि इसका असली जो सॉल्यूशन ये है कि आप लगातार जप करते रहिए. आज हो सकता है कि आपका जप उतना अच्छे से नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप लगातार जप करते रहेंगे तो एक दिन आएगा जब आपका जप सुधर जाए. But if you give up chanting, then you never get any benefit. You're never going to get anywhere. लेकिन अगर आप जप करना ही छोड़ देंगे तो फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं. So just keep chanting, make it do more chanting. इसलिए आप जप करते जाइए और ज्यादा जप करिए. Don't think because my chanting is offensive, I'm not going to chant, but rather because my chanting is offensive, I need to chant more. ऐसा मत सोचिए कि मेरा चैंटिंग जो है अपराध युक्त है, इसलिए मैं चैंटिंग नहीं करता, बल्कि क्योंकि आपका चैंटिंग अपराध से भरा है, इसलिए और ज्यादा जप करने की जरूरत है. One day that chanting will become perfect. और एक दिन आपका चैंटिंग जो है वो परफेक्ट हो जाए. Hare Krishna. Okay. Yes. Okay. Online. Anjali Mataji. Anyone else? Yes, Prabhu. He always travels from the heart of the people. He cannot start individually from the person. He has to listen to the devotee, he has to be in shelter of the devotee, and only the Bhakti. From the heart, through Maharaj. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि मैंने ऐसा सुना है कि भक्ति एक भक्त से ही मिल सकती है, एक भक्त के हृदय से दूसरे भक्त को भक्ति मिलती है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्टली किसी को भक्ति मिल जाए? जरूरी है क्या किसी भक्त से ही हमें भक्ति सीखना है? Yes, it's true. You get bhakti from the devotee. The devotee has bhakti, and he can give bhakti to us. So from that association with the devotee, we get bhakti. तो हाँ, आप जो बोल रहे हैं वो सही है. एक भक्त, क्योंकि उस भक्त के पास भक्ति है, इसलिए वो आपको भक्ति दे सकता है. तो उस भक्त के साथ जो आपका एसोसिएशन है, जब आप उससे मिलकर उसके साथ मिलते हैं, तो उससे आपको भक्ति मिलता है. It was described in Srimad Bhagavatam. Prahlad Maharaj's father asked him, "Where did you get this devotion for Vishnu from?" तो श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज के पिता उनसे पूछते हैं कि ये भक्ति आपके अंदर कहाँ से आ गया? And Prahlad said, "Well, you don't get it just by your own efforts or just by
associating with ordinary people. You have to get it from the devotee, you take the mercy from the devotee. तो प्रहलाद महाराज अपने पिता को बताते हैं कि ये जो भक्ति है ये ऐसे ही नहीं मिल जाता है खुद से या फिर किसी साधारण व्यक्ति से संग करके भी नहीं मिलता है, ये भक्ति मिलता है केवल एक भक्त से. Then again it's mentioned in relation to Jadbharat. Jadbharat and Maharaj Rahugan. Maharaj Rahugan had questioned Jadbharat about where he had gotten his devotion from. And he had given the same reply, that you only get devotion from the devotee. तो यही प्रश्न महाराज रघुगण ने जड़ भरत से पूछा था और कि आपको अपना भक्ति कहाँ से मिला, तो उसका महाराज जड़ भरत ने भी यही उत्तर दिया था कि भक्त से मिला. Hare Krishna. Yes. When we go for preaching, we ask the other person to do chanting, and the other person says that he does it inside his mind and he becomes reluctant to chant in beats. And how to convince him? Chanting within mind or chant in beats? Yes, how to convince someone who is chanting in the mind that they should chant on beats? Well, we could tell them that the louder you chant, the more powerful it becomes. And you're chanting in the mind, it's not going to be very powerful. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि कई बार हम प्रचार करते हैं तो कई लोग ऐसा मन ही मन में जप करना चाहते हैं, वो बोल के जप नहीं करना चाहते, तो उनको कैसे समझाएं. तो महाराज कह रहे हैं कि आप उनको बताइए कि अगर आप जोर से बोल के जप करोगे तो वो ज्यादा शक्तिशाली होगा, आपके जो मन वाला जप है वो कुछ खास काम आने वाला नहीं है. And you chant in the mind, that may be good for you, but if you chant out loud, everyone who hears you, they will all benefit. All living entities will benefit by hearing the chanting of the holy names. और अगर आप मन ही मन में जप करते हो तो हो सकता है उसको आपको खुद को कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आप बोल के जप करते हो तो कई सारे जीवात्मा जो उस जप को सुनेंगे उन सबको लाभ मिलेगा. All the dogs, all the birds, all the trees, they all benefit by hearing the holy name. सारे पक्षी, सारे कुत्ते, सारे पेड़, जो भी कोई सुन रहा है आपके हरि नाम को, उन सबको लाभ मिलेगा. And you're chanting in your mind, you're only thinking of yourself, you're not giving mercy to the other living entities. और अगर आप केवल अपने मन में ही जप कर रहे हैं तो केवल आप अपने ही बारे में सोच रहे हैं, आप दूसरों को कृपा नहीं देना चाहते. Yes, okay. Mataji, yes. So Mataji is asking, you have told us to chant Hari Naam attentively, but we don't get any happiness or taste. So how to develop that happiness or taste? Well, we don't get any happiness or taste because we're so diseased, because we're so contaminated. We're not tasting the pure nectar of the holy name. But within the holy name, there is happiness and there is taste. There is the greatest taste. But we're so contaminated, we're not able to taste it. तो महाराज कह रहे कि हमें जप में खुशी या जप में आनंद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारा स्थिति जो है बहुत बीमारी वाला है, हम बहुत बीमार हैं, हमारा हृदय बहुत ही ज्यादा दूषित है, क्योंकि हरि नाम के अंदर ही सबसे ज्यादा संतुष्टि, सबसे ज्यादा खुशी है. अगर हमें टेस्ट नहीं आ रहा है इसका मतलब हम बहुत बीमार हैं. But you can get that taste. You go on chanting. Gradually, one day you will get that taste and you will feel that happiness. लेकिन आपको वो टेस्ट आ सकता है और आपको वो पूर्ण आनंद मिल सकता है. इसके लिए आपको जप को करते जाना होगा और एक दिन आप ऐसा आनंद को अनुभव कर पाएंगे. How long have you been chanting? कब से जप कर रहे हैं? 4 years. Well, it's not long enough. Prabhupada said it took him 32 years to perfect his chanting. महाराज ने पूछा कि आप कब से जप कर रहे हैं? माता जी ने बोला 4 साल से. तो महाराज कह रहे ये तो बहुत ज्यादा नहीं है. श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि उनको 32 साल लगे अपने जप को शुद्ध एकदम परफेक्ट करने के लिए. So keep chanting, don't give up.
जप करते रहिए, छोड़िए मत, Chant more. और ज्यादा जप कीजिए. Yes, Mataji? So Mataji says that because she has to study a lot, she is not getting enough time to chant. So how to balance her study life and spiritual life? Well, you know, chanting will help you to study better. तो माताजी का प्रश्न है कि समय नहीं मिलता है, पढ़ना भी होता है, तो समय कैसे उसको बैलेंस करें कि पढ़े भी और भक्ति भी करें. तो महाराज कह रहे हैं कि अगर आप जप करोगे तो आपका पढ़ाई भी और अच्छा होगा. Just like, you know, you're studying, but you still take time to eat. You still take time to sleep. जैसे कि आप पढ़ाई करते हो लेकिन फिर भी समय निकालते हो खाने के लिए और सोने के लिए. And you have to take time for something which is important. You have to understand the importance of the chanting. तो आप क्यों समय निकालते हो? क्योंकि वो चीज महत्वपूर्ण है. तो कोई महत्वपूर्ण चीज के लिए आप समय निकालते हो. And oftentimes we're studying, but nothing is going in, nothing is making sense. We're trying to do things, but you know, we're not able to actually learn anything. You would do better to chant. And once you chant, then your mind will become more clean and purified and settled. Then you'll be able to focus on your study. तो महाराज बता रहे कि कई बार हम पढ़ने के लिए बैठते हैं लेकिन कुछ अंदर नहीं घुसता, कुछ भी समझ ना, तो हमें कुछ उसका मतलब बनता है, ना ही उसको समझ पाते हैं, याद नहीं कर पाते. क्योंकि लेकिन इसके विपरीत अगर आप चैंटिंग करेंगे तो आपका मन जो है शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा, और आप उस समय जो पढ़ेंगे वो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे. Yes, Maharaj. If you have a valid reason, how to deal with anger if you have a valid reason. तो अगर आपके पास गुस्सा करने का सही कारण है तो उससे उस गुस्से से कैसे उसको क्या करें? Oh, I don't believe you have a valid reason. You say you have a valid reason. Your anger is actually, it's not really valid. You have to know that you're not really qualified to use anger. तो महाराज कह रहे कि आप कह रहे हो कि आपको गुस्सा सही कारण से आ रहा है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि कोई ऐसा कारण होना चाहिए जिससे आपको गुस्सा आए, क्योंकि आप गुस्सा करने के लिए योग्य नहीं हैं. Unless you're fully in control of your mind and senses, then don't try to use anger in the service of Krishna. अगर आप पूरी तरह से अपने मन और इंद्रियों में नियंत्रित नहीं हैं, तो भगवान की सेवा में आप गुस्से को इस्तेमाल करने का प्रयास ना करें. Rather, you should understand that anger is coming from the lust which was not satisfied, because we had that desire, we wanted something, but we wanted to do something and it didn't work out the way we wanted, we didn't get what we wanted, and the result is we become angry. अभी तो वो गुस्सा जो है इसलिए आता है क्योंकि हमारी अपूरित काम है, जो अपूरित काम की वजह से वो गुस्सा हमारे अंदर आता है. What makes you think your anger is justified? आपको ऐसा क्या लगता है जिससे आपको ऐसा लगे कि आपका जो गुस्सा है वो सही कारण से है? Mataji says that they are blaspheming the Lord, they are in front of everyone, they are saying what kind of Lord. That's what you think. Yeah. Mataji is saying if someone is destroying the idols of the Lord, Okay, and blaspheming the Lord, and then they are asking that now what your Lord can do. They're destroying the idols. I know.
Well, we have to be careful where you put where you put your idols, where you put the deities. You don't want these kind of people to be doing things like that. It's our mistake if we allow them to come and destroy the idols. We have to protect the idols. तो महाराज से ये पूछ रहे हैं कि कई लोग भगवान का निंदा करते हैं, कई बार भगवान का मूर्ति को भी तोड़ते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको भगवान का शिव विग्रह वहां पे स्थापित करना चाहिए जहाँ पे आप उनका अच्छे से देखभाल कर पाए, आप उनको ध्यान से सोच के रखना चाहिए। हमारा गलती है अगर ऐसे जगह पे रख रहे हैं जहाँ पे लोग उसको आके तोड़ेंगे। So when people are threatening to damage, generally our temples in ISKCON, we have to put metal gates in front of the deities so that nobody can damage them. तो ज्यादातर हमारे ISKCON के मंदिरों में हम भगवान के सामने लोहे के गेट लगाते हैं ताकि कोई भगवान के विग्रह को खराब न कर पाए। Some people are criticizing the devotees, so if that is also a valid reason. People, yes, will criticize. Prabhupada said the dogs may bark, but the camel drive goes on. You know, the camels don't get stopped by the barking dogs. तो महाराज बता रहे कि लोगों को बोलने दीजिए, कुत्ते भौंकते रहेंगे, लेकिन ऊंट जो है वो चलता रहता है, वो डरता नहीं है उससे। So you don't get worried about these things. You know, people criticize us all the time. You know, you're going to make a war out of it. आप ये सबकी ज्यादा चिंता मत कीजिए, लोग तो हमेशा ही निंदा करते रहते हैं, क्या आप उनसे लड़ाई करोगे सबसे जाके? We have to cultivate that tolerance. You know, it's very important to be tolerant. हमें जो है सहिष्णु बनना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। So Chaitanya Mahaprabhu said, tolerant like the tree. And the trees tolerate the heat and the cold, the wind and the rain. People come and cut them, break everything, but the tree tolerates. We're encouraged to cultivate that kind of mood. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक पेड़ की तरह सहिष्णु बनने के लिए बोला है। पेड़ जो है गर्मी, सर्दी, हवा, बारिश और कई बार लोग उसको आके काटते हैं, ये सबको सहता है। तो लेकिन हमें इस तरह का सहिष्णु गुण को अर्जित करना है। So chanting the holy name will help you to cultivate that kind of tolerance. तो भगवान के दिव्य नामों का जप इस तरह का सहिष्णु बनने में हमें मदद करेगा। So the question does not make sense, right? Saying that in Nav-Vidha it mentioned to explain anything to non-devotee. So, but they again ask you, why are you not explaining this to me? Is it valid or? Oh, no. There's somebody, the point is, the ninth offense, we don't instruct the glories of the Lord to the faithless persons. We have to create faith in them first, and then you instruct them about the holy name. But first you have to help them to develop faith. And so it's our fault, you know. We will tell them, we can tell them about the holy name, but first they have to develop their faith. We have to teach them the chanting process, get them to chant, and then explain to them they're not the body, explain to them they're not in control of their mind and senses. We have to explain to them that we have a relationship with Krishna, that he's the master and we're the servants. And gradually we can introduce to them the confidential nature of the holy name. तो महाराज बता रहे कि जो 9वां अपराध है जिसमें बताया गया है कि जो जिन लोगों को विश्वास नहीं है उनको भगवान के नाम के गुणगान बताना। तो महाराज बोल रहे हैं कि पहले
आप उनको वो विश्वास दीजिए, पहले उनको वो विश्वास कल्टीवेट कीजिए। और तो ये हमारा गलती है अगर हम उनको पहले विश्वास नहीं दे रहे, तो पहले हम उनको भगवान के नाम में विश्वास दें, उनसे उनको जप कराएं और उनको बताएं कि हम ये शरीर नहीं है, ये हमारा मन और इंद्रियों पे हमारा नियंत्रण नहीं है, हम भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके दास हैं। ये सब समझाने के बाद आप उनको भगवान के नाम के गुप्त महिमा को समझा सकते हैं। You want to study advanced maths, you have to go through the beginning maths, the elementary maths, and then you come up to the advanced maths. अगर आपको उच्च स्तरीय मैथमेटिक्स गणित पढ़ना है, तो पहले आपको जो है साधारण गणित समझना होगा। So they have to be qualified to hear. That's the idea. तो हमें योग्य बनना होगा। Yes. Any other questions? Yes. Okay. एक्चुअली जो हमारा कंडीशन ऐसा है कि हम लोग डिजीज हो रहे हैं, इसको रियलाइज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, इसको रियलाइज कर सकते हैं। Maharaj, this question is, it's very difficult for us to realize that we are diseased. So how to? Doctor tells you you're diseased, you don't accept it. तो इनका प्रश्न है कि महाराज आपने बताया कि हरि नाम में इसलिए आनंद नहीं आता क्योंकि हम लोग बहुत बीमार हैं, लेकिन ये बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि हम बीमार हैं। तो महाराज उत्तर दे रहे हैं कि आपको अगर डॉक्टर बोलता है कि आप बीमार हो तो क्या आप नहीं मानते? Very difficult to believe the doctor. The spiritual master, spiritual teacher is like that. The doctor, we don't have a taste for the holy name. It means we are diseased. We're in conditioned life. We're not tasting the nectar of the holy name. तो जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो एक डॉक्टर की तरह हैं। तो जैसे डॉक्टर हमें बीमारी बताता है, इसी तरह आध्यात्मिक गुरु बता रहे हैं कि अगर आपको हरि नाम में आनंद नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप बीमार हैं। Okay, thank you very much. Hare Krishna. Okay. Huh? Asking the karma about the karma, that we know that the bad karma will always influence whether in this life or in another life. Then why are we forced to do, or why are we doing such karma that impacts? If someone else is doing other karma and that is impacting also our life, then we trust them or we say bad words to them. But again, in our minds, we know that it will influence. But why we are forced to do that? Why are we doing that? You got it? Could not understand, Maharaj. I'm also puzzled. Why do we have the tendency to do?
Maharaj, if we know that these things have, yeah. तो प्रश्न ये है कि अगर दूसरा हमें पता है कि इससे हमें कुछ गलत काम से गलत रिजल्ट निकलने वाला है, तो हम क्यों दूसरे के प्रति ऐसा करते हैं और दूसरे क्यों हमारे प्रति ऐसा करते हैं जब पता है इसका नतीजा गलत निकलने वाला है? Well, we all have our karma. We take birth in this world because of our past. We have a pile of a bank balance, some good and some bad. And the good karma brings us some enjoyment. The bad karma means suffering. If somebody does something to us, a devotee will say it's karma that I must have offended him in my previous life. And therefore they're coming to me today and they're attacking me. तो महाराज बता रहे कि जीवन में हर कोई अपने कर्मा के अकाउंट को लेकर के चलता है। कुछ अच्छा कर्म होता है और कुछ बुरा होता है। जो अच्छा कर्म होता है उससे हमें सुख मिलता है और जो बुरा कर्म है उससे हमें दुख भोगना पड़ता है। तो जब हमें कोई व्यक्ति कुछ हमारे साथ बुरा करता है तो हमें ये समझना चाहिए कि ये मेरा जो कर्म है उसका मुझे फल मिल रहा है। You can also see it as the arrangement of Krishna, that Krishna somehow is teaching us a lesson. हम इसको भगवान का भी व्यवस्था समझ सकते हैं कि भगवान हमें इस तरह से ये शिक्षा दे रहे हैं। So devotee will, when something happens, a devotee will simply say, "Thank you, Krishna." अगर ऐसा कभी भक्त के साथ होता है तो भक्त को यह कहना चाहिए कि धन्यवाद कृष्ण। Krishna may give and Krishna may take. Whatever happens, the devotee will accept it as the arrangement of Krishna. तो कृष्ण चाहे हमें दे और चाहे हमारे से छीने, जो भी कुछ होता है भक्त उसको भगवान की व्यवस्था समझते हैं। We say God has 10 arms. We only have 2. If he wants to take from us, he can take everything. तो ऐसा बोला जाता है कि भगवान की 10 भुजाएं हैं और हमारी 2। अगर भगवान हमसे लेना चाहेंगे तो सब कुछ ले सकते हैं। And if he wants to give us, he can give us a lot also. और अगर हमें वो देना चाहेंगे तो सब कुछ दे भी सकते हैं। So it's Krishna's arrangement. Krishna knows what's good for us. भगवान जान ये भगवान की व्यवस्था है। भगवान जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है। And sometimes it's good for us when Krishna takes it. Krishna really gives us a tough time and takes everything away from us. और कई बार जब भगवान हमसे सब कुछ ले लेते हैं तो वो हो सकता है कि हमारे लिए जो बहुत अच्छा होगा। It means Krishna wants us to just fully surrender to him. और कृष्णा इसका मतलब चाहते हैं कि हम पूरी तरह से उनके ऊपर शरणागत हो जाएं। So try to see everything in relation to Krishna. तो सब कुछ को भगवान के संबंध में देखिए। He's the controller. वो नियंता है। We're under his control. हम उनके नियंत्रण में हैं। We just have to surrender. हमें बस शरणागत करना है। You want Krishna's special mercy? आप भगवान की विशेष कृपा चाहते हैं? Krishna says, when I'm very merciful to someone, I take everything away from them. भगवान कहते हैं कि जब मैं किसी पे विशेष रूप से दयालु होता हूँ तो मैं उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। Then in that helpless condition, they have nothing to do but to surrender to me. और ऐसी दयनीय स्थिति में उनके पास और कुछ नहीं होता मेरे को शरणागत करने के अलावा। Okay, Hare Krishna. How many questions online? So many. 1, 2, 3, 4. Okay, tomorrow. Okay, तो ऑनलाइन भक्तों के प्रश्न कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। तो हम महाराज का पूरे हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे। महाराज इतना समय देके हमारे एक एक प्रश्न को बता रहे इसके उत्तर, ताकि हम भक्ति में आगे प्रगति कर पाए। ऐसे परम वैष्णव का जो संग है वो बहुत ही दुर्लभ है और भगवान का बहुत ही विशेष कृपा है कि हमें महाराज का ये एसोसिएशन मिला है। तो हम इसका पूरा लाभ उठाएं। तो हम सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा महाराज का धन्यवाद करेंगे पूरे हृदय से। हरे
His Holiness Bhakti Vighna Vinasak Nrisingh Swami Maharaj ki. Prabhupada ki. Bhakti Vrinda ki. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare
हरिनाम संकीर्तन की जय। ईश होलिनेस भक्ति विघ्ना से नरसिंह महाराज की जय। लीलाई गोप प्रेमानंदे। तो आप सभी भक्तों की सूचना के लिए कि you want to do more कीर्तन, हरि बोल। So this is the effect of कीर्तन। तो आप सभी भक्तों की सूचना के लिए कि अभी आप सभी के लिए प्रसादम भी है, और प्रसादम अलग वेन्यू पे होगा, दूसरे वेन्यू पे। तो आपको एक डिवोटी गाइड करेंगे। ये जो हमारा बिल्डिंग है उसके बैक साइड में B65
तो वहां पे आप सभी का प्रसादम का वेन्यू होगा। तो जो भी सभी भक्त रिक्वेस्ट है कि सभी भक्त प्रसाद लेके जाएं